Mitali ma'am, can we wait for the 3-4 minutes more? Your sound is not audible. Am I audible? But your voice is not reaching. Please check here. Mitali ma'am, please say hi so that we can. Ma'am, did you check your sound? It's okay, but we are not able to hear you. Ma'am, Radhika ma'am. Actually, Yes. Mitali ma'am is not co-host. Mithilesh Kumar Yadav is co-host. Oh, sorry. That's why. Mhm. By chance, Mitali Mukherjee. So I'm so sorry. Yes, I hope now I can hear you after a long time. Are you ready, Mitali ma'am? No. Now ma'am is co-host only. अच्छा, 2 है. Okay.
Mitali ma'am, now you can try. I'm doing the both. Both I made Yes, it ma'am. co-host. Yes, Now Now I'll I now can. you are audible, ma'am. Good uh, evening, ma'am. You. Good good evening. evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good afternoon, everybody. Yes, welcome to the 49th online training session of Aryavarta Sahodaya School Complex. Yes, so of course, today's RP is none other than everybody's favorite, Miss Mitali Mukherjee, Principal, Millennium World School. Yes, of course, we know that two things are required, good teacher and the active listener. That's be the participants. If both good, then the training session is really a fruitful one. And she's always come up with that renowned principal, very good RP, and very good teacher. Above all, very good teacher whose enthusiastic way of expression really attract each one of us to listen her. And today's topic is very good, very important thing, that is examination anxiety, signs, symptoms, and remedies. Examination is going on now. We feel that if we would have been get this topic before, we would have trained the students, but it is still not late, because examination is a continuous process. We need to train the students very frequently, rather, I can say that. And I welcome my co-host, that is Simple ma'am also, because she's often very ready to any time at a one call. And the training coordinator, though he's absent today, is Himanshu Pandey sir, and our mentor, none other than Dr. C.B. Singh sir, and all committee members, executive committee members, to thank you very much for organizing, taking pain for the training, and the participants too. Thank you very much to the for enrolling yourself for a good topic. And it's a request to each one of you, kindly don't ask for the link of the attendance link, that Mitali ma'am ensure that the yes, after asking the questions, after she's satisfied, she will give a nod, then only I'll post the link for it. Welcome, Mitali ma'am, to these training sessions. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your words of appreciation. Thank you, Aryavat Sahodaya, for giving me this opportunity to conduct today's session. And as ma'am very correctly said, this is a very, very sensitive topic. But even if exams in your schools are over, don't think that this topic is not of any use now. Please remember, every child, or rather every person, every day is going through an assessment. Like, suppose I'm here today in front of you. Now, I'm also undergoing an assessment process, whether I'll be able to conduct the session properly or not, whether I'll be able to answer the questions or not, whether everything will be okay or not. So many things are going on in the mind. So this is also kind of examination. So examination does not mean only the pen and paper test that we write. Exam means every day, every moment of life when we are facing some kind of challenge, some kind of new challenges are posed in front of us and we have to overcome that, then this topic is suitable for those situations. And I'm sure that kind of situations all of us are facing almost every day in our life. So let me just allow to share my screen. And today the topic is very, very interesting, very, very apt. Okay. So first of all, I'll hide my window so that the screen looks a little neat to all of you. So the topic is understanding examination anxiety, signs, symptoms, and remedies. So I'm not only going to talk about examination anxiety, I'm also going to tell you what are the remedies. So the problem is there, that means it has a solution. I would like to start by saying that, before there's a problem in life, God has already decided the solution. So always keep this thought in your mind. Whenever any child is facing a problem, child is facing an issue, you are facing an issue, any time of your life, you have to remember this very beautiful quote, that solution has already been designed. Now, after designing the solution, God sends that problem to us. So
Please keep that in your mind. And I think if we know that, yes, our problem will be solved, we will not face anxiety at all. We may face a step ahead of anxiety, but to anxiety level, we need not go if we believe that solutions are already there. So let us try to understand this topic in a greater details today, understanding examination anxiety, signs, symptoms, and remedies. Now, before anxiety, does anxiety happen in one day? आज मेरे जीवन में बहुत बड़ी कोई तकलीफ आई, मुझे एंजाइटी हो गई, ऐसा नहीं होता है. एंजाइटी डज नॉट हैपन इन अ डे. एंजाइटी डज नॉट डिसअपियर इन अ डे. जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैं इतने दिन से डाइटिंग कर रही हूँ फिर भी मैं दुबली क्यों नहीं हो रही, मैं इतने दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ फिर भी मैं दुबली क्यों नहीं हो रही. तो इसका वही जवाब है जो अभी मैंने आपको दिया, कि आप मोटे भी एक दिन में नहीं होते, इसलिए आप दुबले भी एक दिन में नहीं हो सकते. सिमिलरली आपको एंजाइटी एक दिन में नहीं हो सकती, कि आप एंजाइटी से परेशान हैं, कल आप ठीक थे, आज आप एंजाइटी से परेशान है, ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान को एंजाइटी एक दिन में नहीं होती. सिमिलरली अगर हो जाए तो एंजाइटी एक दिन में जाती भी नहीं है. इट इज अ प्रोसेस. And when the cycle is complete, only then students, teachers, people around you will get relaxation from anxiety. तो इससे एक स्टेप हम लोग पहले पीछे जाते हैं. जैसे आप लोग क्लासरूम में क्लास लेते हैं तो व्हाट डू वी डू? हमें बीएड में क्या सिखाया गया था? हमें ये सिखाया गया था ना कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट योर चाइल्ड ऑलरेडी नोज, व्हाट इज द लर्निंग लेवल ऑफ द चाइल्ड. एंड एज अ गुड टीचर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्ड्स लर्निंग लेवल. मान लीजिए आपको क्लास में सेंटेंस पढ़ाना है, then definitely you will want your children to know about words. Only then you can start sentences. But suppose you are a teacher who goes to the class and comes to know that you have to teach sentences, and you just go to the class and start teaching sentences. So maybe it will happen that many of the students will not understand sentences. Similarly, anxiety is like sentence making. So before this sentence, there are words, there are alphabets. पहले alphabets जमा होंगे, फिर वो वर्ड्स बनाएंगे, फिर वो वर्ड्स जमा होते 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 एंजाइटी पे आएंगे, और उसके बाद जब एंजाइटी हो जाए तो फिर उससे निपटने के तरीके सीखने होंगे. तो लेट अस फर्स्ट कम वन स्टेप behind and understand that what is the step before anxiety. So please try to understand that we will deal with the impact of anxiety on our students' academic performance and mental well-being. Please understand this, teachers. It's very, very important to understand the words you use, your body language, your communication, not only verbal communication, even your non-verbal communication. आप बच्चों को देखते कैसे हैं, आप बच्चों की तरफ कैसे हाथ रखते हैं बच्चों की पीठ पर, आप बच्चों को छूते कैसे हैं, आप बच्चों के बारे में कमेंट्स क्या पास करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एंजाइटी का हमारे बच्चे के एकेडमिक एज वेल एज मेंटल वेलबींग पर असर होता है. एकेडमिकली मे बी अ चाइल्ड हैज अचीव्ड अबव 90 इन ऑल सब्जेक्ट्स, लेकिन मेंटली वो उतना ही अनवेलबींग के स्टेट में हो सकता है. So it is a very, very important, very, very imperative for teachers to understand this, कि मुझे बच्चे के मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना उसके एकेडमिक हेल्थ का ख्याल रखना है, ग्रेड्स का ख्याल रखना है. And unfortunately, I'm very sorry to say this, very unfortunate situation is that 99% of the schools and teachers still are unaware of this fact that actually they are the people who have to take care of the child as well. I think some people need to be muted. So please try to understand that in NCRT, CBSC, our government is doing a lot of work on mental health of students, school-going children. Because India is a very young country, इसका मतलब ये है कि इंडिया में मैक्सिमम एडोलेसेंट लोग हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं. तो जो हम मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं उसका बहुत ही नेगेटिव असर होता है उनके मेंटल हेल्थ पे. तो anxiety can create negative impacts on the child's academic performance and on the child's mental health. So here, educators play a very, very crucial role in recognizing and managing exam-related stress. Here we get the word stress.
स्ट्रेस जो है माय डियर टीचर्स, वो एंजाइटी के पहले लेवल की बीमारी है। पहले इस इंसान को स्ट्रेस होता है और उसके बाद उसकी एंजाइटी डेवलप होती है, इसको प्लीज समझिए। और स्ट्रेस एंड एंजाइटी दोनों से बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस तो फिर भी चलिए अगले साल सुधर जाएगा, बहुत मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सुधर जाएगा, लेकिन मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना इज अ वेरी वेरी टफ टास्क. So please understand, children, sorry, teachers, that you can very easily improve the academic performance of a child, but it's very difficult to improve the mental health of the child, to make the mental health of a child stable. So never ever try to do something which damages, which brings down the mental health of a child. So understanding this topic is very, very important. Okay. Chali. Now, what is anxiety? Let's try to understand. So, what we will try to understand is definition of anxiety. Kali ma'am, sorry to interrupt you. Are you joined in with two? No, no, There ma'am. is one more Mitali Mukherjee showing, so I'll She is, I think, a teacher of SR Vidyapeeth, ma'am, Mitali Mukherjee. You can please remove her, ma'am, so that I can continue. Okay. Okay. So we'll try to understand the definition of anxiety, and we'll try to explain what is the pre-level of anxiety, which is known as stress. Okay. So let us try to do this now. So first, let us try to understand what is stress. क्योंकि पहले सर आता है, उसके बाद बॉडी आती है, और उसके बाद साथ साथ पूंछ भी जाती है. तो एंजाइटी का सर कौन है? एंजाइटी का सर है स्ट्रेस. सबसे पहले आपके जीवन में आता है स्ट्रेस. स्ट्रेस है क्या? व्हाट इज स्ट्रेस? तो अचानक मेरे घर में 5 लोग आ गए, अपना लगेज लेकर, बैग, बक्सा, पेटी सब लेकर आ गए. मिताली, आपके यहाँ 2 दिन रहना है हमें, 24 घंटे. अब मिताली मुखर्जी को हो गया टेंशन, यार कल मेरे स्कूल में पीटीएम है, मुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, मुझे तो लौटते लौटते 5 बज जाते हैं, उसके बाद मेरा 2 सेशन है ऑनलाइन, और इतने लोग का खाना कौन बनाएगा? मेरा छोटा सा घर है, उन्हें रहने कहाँ दूंगी, सोने कहाँ दूंगी, कपड़े कैसे धुलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतने सारे सवाल मिताली मुखर्जी के जहन में आ जाते हैं. तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? मिताली मुखर्जी आ जाती है स्ट्रेस में. कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किधर होगा, how, what, when, where? So many questions arise in Mitali Mukherjee's mind. This is known as stress. So what is stress, my dear friends? Stress means when there is a demand. Demand था कि 5 लोग मेरे घर आए, मैं उनकी सेवा करूं, उन्हें अच्छा खाना खिलाऊं, उन्हें रहने के लिए कमरा दूं, उन्हें सारी सुविधाएं दूं. ये डिमांड था. इस डिमांड के बदले मेरा रिस्पॉन्स क्या था? मेरा रिस्पॉन्स हैप्पी नहीं था. आई वॉज नॉट हैप्पी टू सी दोस 5 पीपल. आई वॉज अनहैप्पी टू सी दोस 5 पीपल बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड. सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स टू अ डिमांड और अ चैलेंज. कल मेरे स्कूल में 4 क्लास का पीटीएम है, मेरा रिपोर्ट कार्ड अभी तक प्रिंट नहीं हुआ. एग्जाम डिपार्टमेंट को क्या हो जाएगा? स्ट्रेस. प्रिंसिपल को क्या होगा? स्ट्रेस. ना प्रिंसिपल विल स्टार्ट शाउटिंग, क्या करते हो आप लोग, रिपोर्ट का टाइम पे क्यों नहीं निकला, आपकी प्लानिंग सही नहीं, आपकी ये नहीं, आपकी वो नहीं है, वो नहीं. सो क्या हुआ? प्रिंसिपल ने हल्ला करना शुरू कर दिया. क्यों हल्ला करना शुरू कर दिया? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड नहीं निकला, रिपोर्ट कार्ड का डेडलाइन था. सो व्हाट इज हैपनिंग?
हल्ला करना is a natural response to a demand. And what is a demand? कि कल 4 क्लास का रिपोर्ट कार्ड चाहिए. So are you understanding? You create stress through your responses. लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स थोड़ा अलग होता, अब इमेजिन करिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपका रिस्पॉन्स थोड़ा अलग हो जाए. Yes, somebody is given a very good suggestion. Count from 10 to 1. Very good. अगर कल पीटीएम में मैंने और आज रिपोर्ट कार्ड नहीं हुआ, अगर मैं ऐसे सोचूं कि कल है ना पीटीएम, आई स्टिल हैव 24 आवर्स विद मी, आई स्टिल हैव 12 आवर्स विद मी. रोज तो सोते ही यार, एक रात नहीं सोएंगे, मस्ती से बैठ के रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, एंजॉय करेंगे रात में, तो मुझे स्ट्रेस होगा क्या? I will not have stress. I will not have stress. I'll be a lovely, happy, smiling person, smiling principal. टीचर, मेरे साथ जो टीचर काम कर रहे हैं उनको भी स्ट्रेस नहीं होगा. वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव. तो माय डियर टीचर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका रिस्पॉन्स ये डिसाइड करता है कि आप स्ट्रेस में हो कि आप स्ट्रेस में नहीं हो. अगर मेरे जीवन में कोई चैलेंज आया है तो मैं उस चैलेंज की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ डिसाइड करता है whether that will create a stress or not create a stress. Are you getting my point? So stress is under your control. आप चाहो तो स्ट्रेस में रहो, स्ट्रेसफुल लाइफ जियो, और आप चाहे तो स्ट्रेसलेस लाइफ जिए. That depends upon you. Now, please remember this, that stress can be short term and long term. Now, short term कैसे? How short term? For example, एक बहुत भारी भरकम चीज है 5 किलो की, और मुझे वो स्ट्रेस उस 5 किलो या 10 किलो का सामान नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर को उठाकर ले जाना है. ये मेरे लिए स्ट्रेस है. यार कैसे उठेगा, बहुत भारी है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे तो हाथ का नस खिंचा गया, नीचे से ऊपर तक मुझे ले जाना है, 4th फ्लोर तक. ठीक है, रोते गाते पीटते चिल्लाते मैं लेकर गई. 4th फ्लोर पे जाकर मैंने उस बस्ते को पटक दिया. चलो, माय वर्क इज डन. क्या होगा? स्ट्रेस खत्म. दिस इज नोन एज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस. यानी एक छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था या मेरा नजरिया में दिक्कत हुई, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. वंस आई make myself free of that vessel of 10 kgs or 5 kgs, my stress is released. This is known as acute stress. But long-term stress, what is the meaning of long-term stress? Long-term stress का मतलब है जो 9th 11th 12th के बच्चों को होते हैं, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मैं कितने पैसे कमाऊंगा, मैं रिटायर, जैसे मुझे भी हो सकता है, मुझे रिटायरमेंट के बाद मेरा घर कैसे चलेगा. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है. जब तक रिटायर नहीं होंगे, जब तक मेरा घर चलाने लायक पैसा नहीं हो जाएगा, जब तक मेरी एक रेगुलर अर्निंग नहीं हो जाएगी, फिर हम चिंता करेंगे ये अर्निंग कब तक रहेगी, कहीं अर्निंग खत्म तो नहीं हो जाएगी, फिर मेरा घर कैसे चलेगा. दिस इज नोन एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. व्हेन यू गो ऑन थिंकिंग and all negative thoughts come in your mind, you are not able to see the other side of the frame, the positive side of the picture, the positive side of the situation. You keep on thinking wrong, negative. That is known as a chronic stress, where you're always under stress. Are you getting my point? So please remember, life will always throw challenges on you. Teach this to your children. Life will always throw challenges at you. Life will always make zigzag turnings. You never know what is at the other side of the tunnel. Life will always bring you to that phase where you will not know what is on the other side of the tunnel. But how you respond is very, very important. सबसे पहले तो मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि never ever react. रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स का फर्क आपको पता होगा अगर आप मेरी सेशंस करते हैं तो. रिएक्शन मीन्स व्हेन यू गिव एन इमीडिएट आंसर, and normally reactions are negative, not good. But response means when you think and then you do something. So definitely this is supposed to be better than reacting. So अगर आप respond करते हैं तो chances are कि आपकी stresses कम होंगे. और जब आप respond भी करते हैं, अगर आप positive respond करेंगे तो there are 99% chances कि आपको stress touch नहीं करेगा. लेकिन here I would like to add one more thing, my dear educators, that stress is a part of your life. You cannot ever say मुझे तो कोई stress नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. कैसे stress नहीं है?
अगर स्ट्रेस नहीं है इसका मतलब आप पे कोई प्रेशर नहीं, और अगर आपके पास 1% प्रेशर भी नहीं है तो चांसेस आर यू विल नॉट परफॉर्म इन योर लाइफ ऑल्सो। हम थोड़ा सा प्रेशर हमारे लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन उस प्रेशर को हम लेते कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है कि मुझे एक्यूट स्ट्रेस है कि मुझे क्रॉनिक स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस मेरे हेल्थ को असर करेगा कि नहीं करेगा, वो स्ट्रेस मेरे मेंटल हेल्थ को असर करेगा कि नहीं करेगा, मेरे फिजिकल हेल्थ को असर करेगा कि नहीं करेगा, मेरे रिलेशंस को असर करेगा कि नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। आई अंडरस्टैंड। अब एक अच्छी बात आपको स्ट्रेस के बारे में, लेट मी टेल यू, देयर इज वन स्ट्रेस व्हिच इज नोन एज यू स्ट्रेस। EU stress. Now, what is this you stress? You stress is a happy stress. When you are happy, जैसे मान लीजिए मेरी कल शादी होने वाली है, तो अगर मेरी कल शादी होने वाली है तो आपको लगता है मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ? डेफिनेटली हूँ। कौन सा घर होगा, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, वो शराब तो नहीं पीता होगा, वो सिगरेट तो नहीं पीता होगा, मुझे प्यार करेगा कि नहीं, मेरी तारीफ करेगा कि नहीं, मेरी सासू माँ कैसी होगी, मुझ पर चिल्लाएंगी तो नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टिल, suppose tomorrow you are getting married, you are happy today. Despite of all the stress that you have about the family, about the boy, about tomorrow, you are happy. मेरे कल रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, एमबीए के रिजल्ट्स निकलेंगे, पता नहीं क्या होगा, मुझे 70% आएगा कि नहीं, मुझे 80 आएगा कि नहीं, ठीक है, दैट इज स्ट्रेस। But at the end of the day, you know that tomorrow you will be an MBA qualified person. So it makes you happy. So that stress is known as you stress. And of course, that is also temporary stress. It's a temporary stress because it stays for some time. Clear? Are you understanding this? Some of you are giving such lovely comments in the chat box, which is telling us that you are into the session. So you got it? Stress, what is stress? Stress is your response to a demand or a challenge, okay, which can, of course, change. Now, the next level is anxiety. Anxiety क्या है? Stress होते 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 एक ऐसी स्थिति बन गई, एक ऐसा समा बन गया कि मैं हमेशा टेंशन में हूं, वरी में ही हूं। I am never at peace, never calm. मेरे पास आज 10 रुपए है, 20 क्यों नहीं है, 20 हो जाते तो मैं खुश हो जाती, 20 हो गए तो 30 क्यों नहीं हुए, 30 है तो 50 क्यों नहीं हुए, बट हैप्पीनेस इज नॉट देयर। सो ऐसा प्लीज मत सोचिए that successful people are not suffering from anxiety. Their chances are they are suffering from more anxiety than unsuccessful people, because when success comes, it brings along with it many other jargons, one of which is anxiety, my dear educators. Because when success comes, we also start fearing failure. When we are failing all the time, we don't worry. क्या हुआ, इस बार फेल किए, फिर तो फेल ही करेंगे। मैं एक छोटे बच्चे को एक दिन मैंने स्कूल में देखा, the child was, I think, in class 1 or senior KG, I exactly don't remember. And the mother was so much in panic. The mother came to my room and she said, "Ma'am, देखिए मेरा बच्चा फेल कर गया, ये हो गया, वो इतने खराब नंबर आए, ग्रेड आए, पता नहीं." She was so worried. And I took the report sheet of the child and I was just going through. And then all of a sudden I looked at the child. और मैंने उस बच्चे को देखा, he had a wonderful smile on his face. एक ऐसी मुस्कुराहट जिसको देखकर मैं अपनी जिंदगी भर की टेंशन को भूल गई। Such a beautiful smile, such a lovely child he was, sitting right in front of me. And the mother was blah, 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 very much tensed about the child's marks and future and grade and this and that. And the child absolutely had nothing, no tension in mind. Now what happened? What is this? Now the child doesn't even know I've failed or passed, I've got what marks, what grades. So, once you start achieving things in life, आपको वो डर होता है, कहीं मैं वापस वैसा तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं फेलियर तो का मुंह तो नहीं चाटूंगा। एक मैच आप जीत गए, दूसरे मैच में आपका टेंशन और एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत हाई होता है। जब तक आप नहीं जीतते आपको कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस नहीं। So please remember this, that anxiety means excessive worry or fear. अकारण भी हो सकता है,
स्ट्रेस तो तब होता है जब आपकी लाइफ में एक चैलेंज आता है, एक डिमांड आता है, लेकिन एंजाइटी कब होता है? आई एम नॉट ऑडिबल क्लियरली, am I not audible? Somebody is complaining. Please check your network connections, my dear. Ma'am, you are audible, ma'am. Okay. So what is anxiety? Excessive worry. कुछ लोगों को आप देखते हैं ना, वो उनसे आप कभी भी कहेंगे चलो यार कैसे हो, अच्छे हो? नहीं यार सर में दर्द है, पता नहीं ये पैर में दर्द है, पेट फूल गया है. They're never happy. They're never happy. But there are some people who will say, थोड़ा बहुत पैर में दर्द है, बॉडी है तो चलता ही रहेगा. Never mind, come on, let's go and watch a movie. So this is the kind of solutions that you have to come up with. So please remember, don't hard press your students so much that they become patients of anxiety. They're always thinking about exams. इस एग्जाम में अच्छा हो गया, पता नहीं अगले में क्या होगा, कर पाऊंगा कि उससे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं. This is not something which is going to decide your life, your fate. Nothing in this world is as important as you are. मुझसे ज्यादा important मेरी लाइफ में और क्या हो सकता है? So when I say मुझसे, what do I mean when I say मुझसे? Means my health, my calmness, my pleasure, my happiness, my mental peace, my good mental health, my good physical health. Nothing is more important than that in life. So you have to train your children, you have to teach your children that amidst exams के बीच में भी कभी वो स्टेज नहीं आना चाहिए कि आप anxious हो जाए. Your work is just to study and perform and see your result, analyze your result and try to overcome it. लेकिन anxious state of mind में नहीं, relaxed state of mind, peaceful state of mind. Okay. That is very, very important. Now, what are the symptoms of anxiety? Persistent restlessness, muscle tension, cognitive distress. Cognitive distress का मतलब क्या हुआ? लिखना है कुछ, लिख दिया कुछ, बोलना है कुछ, बोल दिया कुछ, बोलना है डबल एल, बोल दिया सिंगल एल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. हम जानते हैं फिर भी गलत लिख देते हैं. होता है ना, बहुत बच्चे कहते हैं मैं जानता था फिर भी मैंने गलत लिखा. दिस इज द स्टेट ऑफ एंजाइटी इन द चाइल्ड. रात में नींद नहीं आएगी, आप सोचते ही रहोगे, आप सोचते रहोगे, सोच कर आप क्या कर लोगे, आप आइंस्टाइन बन जाओगे, सोचकर कुछ डिस्कवरी कर लोगे. ऐसा नहीं हो सकता. So you have to learn how to relax yourself. That's very, very important. Now, anxiety एक ऐसी बीमारी, मैं तो उसको बीमारी ही कहूंगी, एक ऐसी बीमारी है within quotes which can be chronic or episodic. Now, what is the meaning of chronic and episodic? Chronic मतलब ये भयानक स्टेज में चला गया. This person is always anxious. कुछ लोगों को देखेगा आप, हमेशा पसीना निकलेगा, हमेशा परेशान रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, हमेशा उनके हाथ ऐसे ऐसे होते रहेंगे, वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, उनको नहीं पता होगा मुझे क्या करना है. लॉन्ग टर्म, वेरी करेक्ट नेहा जी. एंड एपिसोडिक मतलब कुछ हुआ मेरे साथ, थोड़ी देर के लिए मैं एंशियस थी, फिर मैं नॉर्मल हो गया. बट दिस इज वेरी, वेरी रेयर. एपिसोडिक इज वेरी रेयर. क्यों? क्योंकि एंजाइटी का पहला स्टेज है स्ट्रेस. अगर स्ट्रेस कंटिन्यूड है तभी एंजाइटी होती है, और जब कंटिन्यूड स्ट्रेस है तो जाहिर सी बात है दैट ऑल ऑफ अ सडन एंजाइटी आपकी खत्म नहीं होने वाली. हो सकता है थोड़ी कम हो जाए एंड यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस. फिर यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस सो दैट द स्ट्रेस इज डिमिनिश्ड. You don't feel stress in your life. That is very important. But I would always suggest, feel a little bit of stress. अगर आप कहीं बोलने जा रहे हैं और आपके थोड़े से पैर नहीं कांपे, थोड़ा सा रिविजन आप नहीं करो, थोड़ी सी टेंशन नहीं हो, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी. सो दैट मच ऑफ स्ट्रेस हमेशा एक इंसान को होनी चाहिए, which pushes the person to do better in life. I'm always relaxed, always sleeping on my sofa. अरे सेशन है तो क्या हुआ, मैं कुछ भी कपड़े पहन लूं, अरे मैं अपने मेट को बोलूं अरे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, इंटरनेट है कि नहीं मैं चेक भी नहीं करूं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, बहुत खुशी मनाने की बात है. नहीं, इट्स रॉन्ग. इसका मतलब आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट माई परफॉर्मेंस. अगर मैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्शियस हूं तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन करूंगी, अपने इंटरनेट चेक करूंगी, अपना माइक चेक करूंगी, अपना वीडियो चेक करूंगी, थोड़े से बाल ठीक करूंगी, थोड़े से साड़ी ठीक करूंगी कि भाई मुझे प्रेजेंटेबल लगना चाहिए. All this is also a part of stress, which is for the good, which is for the performers. Clear? Now,
long-term anxiety can lead you to depression. आप सुनते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं डिप्रेशन की बीमार हो गई, मैं इतने महीने डिप्रेशन में थी, इतने साल डिप्रेशन में थी. Nowadays it's a very common word. और एक और बात ऐड करना चाहूंगी, आजकल पेरेंट्स भी आकर हमें बहुत सुनाते हैं, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, टीचर ने डांट दिया, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, टीचर ने ये नंबर काट दिया, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया. They don't understand what is depression. They just don't understand what is depression. And they're using a very heavy and a very wrong word as an adjective to the child's profile, which is very, very wrong. Depression will only happen when you're consistently under anxiety. So imagine you've crossed the second stage, first stage of stress, next stage of anxiety, and the third stage you are into, that is of depression. Okay. Now, what is depression? What is a symptom of depression? Persistent low mood, change in the appetite, sleep disturbances, feeling of worthlessness. I'm very sorry to say this, that the last ultimate stage of depression is when a person commits suicide. Even yesterday I was reading somewhere in the WhatsApp, I just hope it is not true, that there was a child who was an MBA and he was working in an MNC, and the last call he made to his girlfriend stating that this tremendous work pressure, time mismanagement, that is leading him to tremendous anxiety and depression, and this poor child performs suicide. So please remember that you have to save your children from depression. एक पेरेंट, आज ही मेरे यहाँ पीटीएम था, एक पेरेंट आया मेरे पास, एक बच्चे को 86 आया था, बाकी सारे में उसको 90 प्लस 95 प्लस थे, एक में 86 था. तो पेरेंट ने मुझसे पूछा, मैम मेरे बच्चे को इसमें 86 क्यों आया, इसकी पढ़ाई नहीं होती अच्छे से, ये नहीं होता, वो नहीं होता. You know, I was just looking at the parent, and he was speaking, and I just quietly smiled again. Now, when the parents asked, I said, sir, I don't have any answer actually. Had he been my child, I would have appreciated him. I would have taken him to a cafe for a chocolate, hot chocolate or something else. और आप इस बच्चे के लिए इतने दुखी हैं, तो मेरी और आपकी सोच में बहुत प्रॉब्लम है. Are you understanding? So, आजकल एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी हाई है, हर पेरेंट सोचता है मेरे बच्चे को 95, 97, 98 होना चाहिए. मुझे एक टीचर ने बताया कि एक पेरेंट ने उनसे ये कहा, मैम इसको 96 क्यों आया, 4 नंबर गए कहाँ. So ये लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है. Every parent thinks my child will complete IIT. My child is an IITian. और इससे की रिजल्ट से क्या होता है, एक्चुअली हम अपनी एक्सपेक्टेशंस का सारा टोकरा लेकर बच्चे के सर पे रख देते हैं और ग्रेजुअली फोर्स करते हैं कि वो डिप्रेस्ड हो जाए. सो यू आर द एजुकेटर्स, यू हैव टू हेल्प योर चिल्ड्रन कम आउट ऑफ दिस. So please remember, if there is a child in your class who is persistently low mood, is not wanting to eat, not sleeping properly, and the child feels I'm useless, I'm of no good, I can do nothing in my life, इसका मतलब वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है. Now, what is depression? Mood disorder, characterized by persistent sadness. Of course, एक इंसान जो डिप्रेशन में हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, बोलेगा नहीं, गाएगा नहीं, डांस नहीं करेगा, इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली दुखी. डिप्रेशन मिनिमम 2 वीक्स तक होता है. अगर कोई बच्चा 2 दिन नहीं हंसे, इसका मतलब वो डिप्रेशन में नहीं है. प्लीज, ये मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ, डिप्रेशन क्या होता है. डिप्रेशन एक कंटिन्यूअस फेज ऑफ लो मूड है, मिनिमम 2 वीक्स. देन यू शुड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा इसको डिप्रेशन हो रहा है. अगर बच्चा घर जाकर रोया, आज रात में खाना नहीं खाया, इसका मतलब वो डिप्रेशन में नहीं है. इट्स अ टेम्पररी हैंगओवर, दैट्स इट. आर यू अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज टेंशन? अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, मैं आपको रेमेडीज नहीं दे रही हूँ. व्हाट इज टेंशन? I'm giving you the definition, I'm giving you the symptoms, and I'm giving you what is the meaning of it. Now, tension is something which is very, very, very short term, generally. But severe cases can be chronic also. आप हमेशा टेंशन में रहते हो. अभी मुझे मेरा पति पसंद ही नहीं, जब भी मैं अपने पति को देखती हूँ मुझे टेंशन हो जाता. तो पति तो भाई रोज घर पे आएगा ही, पति को तो आपको रोज देखना ही है,
तो अगर आपको पति के चेहरे से टेंशन होता है तो आपको लॉन्ग टर्म टेंशन हो जाए. It will be a long term chronic tension. So try to develop a loving atmosphere around you. If you hate your neighbors, if you hate your family members, if you hate your principal, if you hate your colleagues, if you hate your students, if students in a class start hating each other, that means the tension will continue to percolate for 365 days. Are you getting my point? So teach children to love each other, to be happy with whatever they have in life. Because when you're happy, you are not having tension. So it's a mental और emotional strain due to stress और लड़ाई. आपको लड़ाई हो जाएगी किसी के साथ, आपको टेंशन हो जाएगा, फिर आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप सर पकड़ कैसे बैठे रहोगे, आपको मेरे सर में दर्द हो रहा है. Are you understanding? So please remember that the symptoms are muscle stiffness and emotional drain out. Okay. Now anxiety can be specific to exams or general. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को हर चीज पे लेटर एंजाइटी हो जाती है. पहले स्ट्रेस होता है, जमते जमते एंजाइटी हो जाती है. और इट कैन बी स्पेसिफिक टू एग्जाम्स. सो आपको समझना होगा बच्चे से बात करके कि आप बच्चे को महसूस करके, बच्चे को देखकर, ये क्या उसे सिर्फ एग्जाम के समय एंजाइटी होती है, बाकी टाइम वो नॉर्मल रहता है. सो अगर बाकी टाइम नॉर्मल रहता है, इसका मतलब उसको स्पेसिफिक टू एग्जाम एंजाइटी है, और नहीं तो generalized anxiety disorder है उसको, which needs counseling. Now what are the symptoms of anxiety? Increased heart rate, palpitation. बहुत लोग आप सुनते होंगे, मेरे साथ मत चिल्लाओ, मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरे बच्चे को पीटिए मत, उसको palpitation होने लगता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, nausea, stomach discomfort, headache, sweating, trembling. कुछ बच्चे को जरा से भी डांट दो वो शेक करने लगते हैं. These are all symptoms of severe anxiety. आप बच्चे को सिंपल वर्ड्स में डांट रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, उस डांट की वजह से वो बहुत कुछ नेगेटिव सोच ले रहा है. मैम डांट रही है, लगता है इसके बाद मुझे मारेंगी, सर लगता है मुझे पीट देंगे, मुझे हथौड़े से मार देंगे, मुझे इससे मार देंगे, मुझे उससे मार देंगे, मेरा सर फट जाएगा, उसमें स्टिचेस लग जाएंगी, बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा. बच्चे ने इतने दूर सोच लिया, लेकिन आप सिंपल एक थप्पड़ ही मार, तो क्या होगा उस बच्चे को, वो सीवियर, वो स्ट्रेस से बढ़ते 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 वो एंजाइटी में चला जाएगा. तो एंजाइटी के ये निशानियां हैं, फिजिकल सिम्टम्स है ये, समझ रहे? दैट्स क्लियर आई थिंक. नाउ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं. अगर किसी को एंजाइटी है तो जरूरी नहीं यू विल ओनली सी फिजिकल सिम्टम्स, देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आल्सो. नाउ अ पर्सन हु इज इन एंजाइटी ऑलवेज फील्स अ फियर ऑफ फेलियर. मैं कुछ नहीं कर सकता, लगता है मैं फेल हो जाऊंगा इस साल भी, पता नहीं मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, लगता है मुझे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मैं तो क्लास में फर्स्ट नहीं आऊंगा. ये भी एंजाइटी होती है लोगों को. जो फर्स्ट आते हैं, जैसे मैंने बोला, सक्सेस ब्रिंग्स अलोंग विद इट मेनी थिंग्स. तो जो फर्स्ट नहीं आता है क्लास में, हमेशा वो ये सोचेगा मैं तो इस बार फर्स्ट नहीं आऊंगा, मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाहता क्या है मैं फर्स्ट आऊं, जिस वजह से उसे एंजाइटी हो रही है. तो लोग एक्चुअली, माय डियर एजुकेटर्स, मुझे ये समझ में आता है जो आजकल लोग खुश होना ही नहीं चाहते. They're not happy with the small things in life. They're not happy with the eclairs chocolate. They want a Cadbury silk chocolate every time. So that is the reason why people, why children around us are becoming more and more and more unhappy. How many children do you see in your school who are innocent and are laughing and are smiling and are enjoying? अगर वो नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी वो इतनी नेगेटिव बातों में इंडल्ज्ड हैं, वो इतनी गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं कि उनके लाइफ की हैप्पीनेस ड्यू टू रॉन्ग रीजंस है, नॉट ड्यू टू स्मॉल एंड करेक्ट रीजंस. ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक. मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती, मुझे तो गाना गाना नहीं आता, मुझे तो डांस करना नहीं आता, लुक एट हिम और लुक एट हर, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा कर सकता है. ऑल द टाइम यू आर डिमीनिंग योरसेल्फ. तो अगर आप अपने आप को डिमीन करते रहोगे, जैसे मैंने शुरू में आपको क्या बोला, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर योरसेल्फ. आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए. एंड ऑल द टाइम यू आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ. हाउ डू यू थिंक यू विल बी हैप्पी इन लाइफ? इट्स नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज इरिटेशन. कुछ लोग हमेशा इरिटेटेड है, कभी मुस्कुराते नहीं है, कभी हंसते नहीं है. दैट इरिटेशन, यू नो, दोस ब्रेन, उसके ब्रेन में कुछ ऐसी एंजाइम्स का secretion actually hota hai, causes irritation. And why those enzymes are secrete? Because the person is not ready to love, laugh and be happy. Okay, difficulty in concentrating, of course. अब आप अंदर से anxious हो,
आपका मन लगेगा इस सेशन में? आपको मन लग रहा बाप रे कब खत्म होगा, मुझे ना, मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़ना है अभी, और आप चलते चलते आपको नेटवर्क नहीं मिल रही, आप एक जगह रुक के अपने घर से ये सेशन कर रहे हैं, अब आपको लगेगा कब मैम का सेशन खत्म हो, तुरंत पैकअप करो, बंद करो, अटेंडेंस लिंक भेजो यार, मैं मुझे अटेंडेंस लिंक भरना है और ट्रेन पकड़ने जाना है। तो आपकी एंजाइटी लेवल अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर बच्चा रात में अच्छे से नहीं सोया है, अगर बच्चा प्रॉपर रेस्ट लेकर स्कूल नहीं आया है या एग्जाम देने नहीं आया है, डेफिनेटली उसका एग्जाम अच्छा नहीं, यू कैन नॉट स्टॉप इट, this will happen and the child's exam will not be good enough. This much you have to understand. Okay, are you getting my point, what I'm trying to say? So please try to understand this. Now next is cognitive symptoms. What are the cognitive symptoms of anxiety? Cognitive symptoms of anxiety. Now, cognitive symptom of anxiety is discuss how anxiety may lead to influx of rapid and intrusive thoughts. Now, what is cognition? सबसे पहले प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉग्निशन का मतलब क्या। कॉग्निशन का मतलब हमारा दिमाग। तो अगर हम एंशियस हैं, अगर हम हमेशा एंजाइटी में हैं, आपको लगता है आपका दिमाग सही से काम करेगा? आप ब्लैकआउट हो जाओगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और आप प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो जो इंसान बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहता है, देखिएगा वो कंफ्यूज रहता है। आप उसको 4 बार बुला रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है, वहां लॉस्ट है वो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। So anxious people who are having high level of anxiety have racing thoughts, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, वो एक जगह स्टक होके नहीं रह सकते। The mind goes their decision making capacity. Now there are social symptoms also. अगर आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, उसके बच्चे से मिलते हैं, तो भी बिकॉज यू आर एन एजुकेटर यू कैन फाइंड आउट दैट ये बच्चा एंजाइटी का शिकार है या नहीं। कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, वो घुलना मिलना चाहेगा ही नहीं किसी से, अगर घुलेगा मिलेगा भी तो बहुत बात नहीं करेगा, थोड़ा बहुत। सोशल विथड्रॉल, वो किसी से मिलना नहीं चाहेगा, बात नहीं करना चाहेगा, कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा, खुलेगा नहीं, किसी के साथ हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, गाना नहीं गाएगा, डांस नहीं करेगा, खाएगा नहीं, and he's always irritated. Some children in the class are like that. No, nobody wants to be their friend because they're always unhappy, always sad, always shouting, always irritated. Are you getting my point? Now, why people are under so much of anxiety? What is the reason? The reason is that we are not prepared. We are not prepared for different kinds of situations in life. मैंने तो सोचा था मैम 1 महीने बाद एग्जाम होगा। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दे रही हूँ मेरे बेटे का। उसका ही इज इन डूइंग इंजीनियरिंग, सो नॉर्मली उसका सेमेस्टर एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ जून। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यू टू द इलेक्शन, द यूनिवर्सिटी हैज प्रीपोन्ड द एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। मम्मा एग्जाम्स इतने पहले क्यों हो गए, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे लगा मेरे पास 2-3 महीने समय है, अब इतने पोर्शन को कैसे रिवाइज करना। सो लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन लीड्स टू एंजाइटी, प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर द डायलॉग, चिल्ड्रन आर नॉट प्रेशर कुकर्स where you can cook anything that you want. You can cook an IITian, you can cook an NEET qualified person, you can cook an MBA, you can cook a MPhil by just putting pressure. It will not happen, please. High academic expectations, like I just told you, the parent came and told 96 क्यों आया, 4 कहाँ गए। ये सारी चीजें क्रिएट करती है प्रेशर एंड फियर ऑफ जजमेंट और क्रिटिसिज्म। अगर आज मैं ये सोचूं कि पता नहीं मेरे फीडबैक कैसे आएगा, मेरे रिमार्क्स कैसे आएंगे, लोग क्या कहेंगे, तो मैं सेशन से ज्यादा अपने फीडबैक पे कंसंट्रेट करूंगी, तो एज अ रिजल्ट मेरा सेशन तो खराब होना ही है। व्हाटएवर होना चाहिए उससे नीचे तो जरूर जाए। So please remember, these are the basic reasons of anxiety. इसलिए कभी भी अपने बच्चे को, आपको क्या सिखाना अपने बच्चे को, you should be prepared every day. You have to give the child the gift of self-study, regular study. आपको child से expectation सोच समझ कर करना है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है। आप भी अगर किसी बच्चे को पहले 20 आता था 100 में अब 40 आ रहा है या 30 आ रहा है, it's a development, improvement. Please
Teach this to yourself and your principals. You have to save the child from pressure and, of course, fear of judgment. I think this is done so much in so many schools that children are passed through comments, through criticism, so much. Next. Okay, so I'll be a little fast. I'll come to the strategies of educators. Encourage open communication. Please talk to children. Next is teach them stress management techniques. Now, what is stress management? Stress nahi hoga to anxiety hoga hi nahi, anxiety nahi hoga to depression nahi hoga. These three are linked to each other. Please understand. तो कैसे हम stress को beat कर सकते हैं? Of course, the best way to beat stress is yoga and meditation. Ask the children to practice mindfulness. Mindfulness का मतलब क्या हुआ? Never react, always respond. आपके पास कोई भी लाइफ में सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर करती है, जैसे मान लीजिए डस्ट से मुझे एलर्जी है, तो डस्ट ट्रिगर्स माय एलर्जी. सिमिलरली कोई एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में होती है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो आप रिएक्ट मत करो, थोड़ा समय दो अपने आप को, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो. इससे स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा. And as a teacher, provide a supportive learning environment to your child. Please, कोई तो सपोर्ट करो, उस फेलियर को भी सपोर्ट करो प्लीज, क्योंकि वो मैथ्स में फेल हो सकता है गाने में, डांस में, पब्लिक स्पीक में बहुत अच्छा हो. कोई तो अप्रिशिएट करो, कोई तो प्यार करो, कोई तो उसके गुण को समझो, टैलेंट को समझो, उसके पोटेंशियल को समझो. And of course, having a growth mindset. Growth means, what is the meaning of growth? Growth means raising from 10 to 12, 12 to 15, 15 to 30 is a growth mindset. Your expectations, whatever you have expectations, blah, 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 forget about that. Fire it out from your mind. The child is not born to fulfill the parents or the teacher's expectation. मैं इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म नहीं लिया मैंने कि मैं अपने माँ बाप की और अपने टीचर्स की और अपने हस्बैंड की और अपने नेबर्स की और अपने कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करूं. प्लीज, मैं इस दुनिया में इसलिए हूं कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करूं. टीच द चाइल्ड दिस. लेकिन हाँ, उसको ये भी सिखाना है साथ में कि व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन, दे कैन सेट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस इन देयर माइंड. As a teacher, you have to set the bar. बेटा ये हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल है, लेकिन वो बार सबके लिए अलग होती है. प्लीज, स्कूल एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एकेडमिक्स cannot be the same for everybody. वो कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं है कि मीटर और किलोमीटर में ही नापा जाएगा. किसी के लिए उसका एक्सपेक्टेशन 10 है, किसी के लिए 20, किसी के लिए 90, किसी के लिए 100. This should be very, very clearly defined, shared, discussed mutually with the students. You cannot set an expectation for me or for your children. You have to set an expectation with mutual cooperation, mutual collaboration, discussion, and mutual consent. Okay, you understand this? Now, classroom techniques, always remember, break down task into smaller goals. अगर आप बच्चे को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दे देंगे, बच्चा घबरा जाएगा, लेकिन आप रोज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा देंगे तो बच्चा आराम से उसको कर सकता है. Implement relaxation technique, deep breathing, meditation, yoga, and of course, teach the child time management. एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ. क्या आप लोग में से कभी किसी ने अपने क्लास में बच्चों को SWOT एनालिसिस कराया? SWOT, SWOT analysis. S for strengths, W for weakness, O for opportunities, and T for threats. क्या आपके बच्चे को पता है? क्या आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपकी क्या, आपकी वीकनेसेस क्या है? मैंने बहुत सारे टीचर्स को दिया है ये लिखने के लिए. व्हाट आर योर वीकनेसेस? एंड द वीकनेस कॉलम इज ब्लैंक. दैट मींस द टीचर हैज नो वीकनेस. दैट मींस द टीचर डजंट नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ. प्लीज टीच दिस टू योर चिल्ड्रन. अगर मेरा बच्चा अपना वीकनेस जानेगा तभी तो वो उस पर इंप्रूव करेगा. अगर हमको अपना वीकनेस ही नहीं पता, हम इंप्रूव कैसे करेंगे? और अगर वीकनेस पहले से डिफाइंड है, धीरे धीरे उस पर काम करके एक सर्टेन टाइम के बाद हम उस वीकनेस को ओवरकम भी कर सकते हैं. सो एज अ टीचर, you have to teach the child how to break down tasks into smaller goals, implement relaxation technique, and promote effective time management. And of course, create a positive learning environment where nobody teases, nobody demotivates, nobody activates the child learning, nobody diminishes the child's smile.
Please create a happy learning environment. When I say learning environment, what do I mean? I mean the physical environment and a classroom. Airy होना चाहिए, proper benches होने चाहिए, बच्चों का काम दिखना चाहिए, colorful होना चाहिए, happy होना चाहिए. And I also mean the mental environment. Teacher is coming ऐसे चेहरा बनाकर. Very bad, very wrong. You have to go to the class happily. Hello, children, how are you? So, are you all smiling, happy today? Like this. And create that mental bridge. आपके और आपके बच्चे के दिमाग में एक mental bridge होना चाहिए. And of course, you have to teach them problem solving skills. It is one of the skills of the 21st century as well. How to solve problems. Now, आप कैसे सिखाओगे problem solving skills? Through small case studies. एक इंसिडेंट आप दे दो बच्चे को, बच्चे ऐसे आप होते तो क्या करते, उसको क्या करना चाहिए. सो धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सीखेंगे. तो उनके जीवन में भी जो एग्जाम्स आएंगे, नॉट ओनली योर पेन एंड पेपर टेस्ट, उनके जीवन में भी जो एग्जाम्स आएंगे, उन एग्जाम्स को भी हमारा बच्चा बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली उनके साथ वो डील कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मिस्टेक्स. बच्चा गलती करता है, हम रेड पेन से करेक्शन कर देते हैं, उसको डांटते हैं, तुमने गलती क्यों की. लेकिन आप खुद सोचो, क्या आप इतने अच्छे इंसान बन सकते थे इफ यू हैड नॉट कमिटेड मिस्टेक्स इन योर लाइफ. सो वैल्यू ऑफ मिस्टेक्स. मिस्टेक्स को एक बड़ा हीरो बनाइए, शाहरुख खान के जैसे, कि अरे मेरे लाइफ में एक शाहरुख खान आया. क्यों आप अपने क्लास के टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हैं. जब भी हम कोई गलती करें तो बच्चे कहे शाहरुख खान, यानी शाहरुख खान एक रोल मॉडल है. मिस्टेक इज अ रोल मॉडल. उस मिस्टेक से मैंने सीखा, कुछ सीखा जो मैं आगे जाकर नहीं करूंगा. करने दीजिए ना बच्चों की गलती. स्कूल ही तो है, हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लाइफ में ये गलतियां वो नहीं करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. उस बच्चे को जिसने आईआईएम किया, कल उसने सुसाइड कर लिया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई गई थी इस बच्चे को. The child was very good in academics, but I'm sure the child was not good in life skills. I know I should not be saying like this about someone, but I think otherwise वो बच्चा कोई ना कोई रास्ता निकालता, सुसाइड नहीं करता. सो मिस्टेक्स का कुछ और नाम दे दो अपने स्कूल में. मैंने तो अभी सोच लिया, इट जस्ट केम टू मी इंस्टेंटली, मैंने अभी सोच लिया मैं अपने स्कूल में यही करूंगी. मिस्टेक्स का नाम दूंगी शाहरुख खान. सो व्हाट हैव यू मेड? यू हैव मेड अ शाहरुख खान. How you make the mistakes such, you glorify mistakes so that you don't make those mistakes again. And of course, please don't hesitate to seek professional help. Don't think that you are a teacher, aapki ek session ho gayi anxiety pe to aap counselor ho gaye ho. No. If there are cases which you cannot handle, please refer them to counselors, because children need this. Before the next child suicides, please let us help them. Let us refer them. Let us send them to the right people so that everybody is happy. Everybody is learning happily, everybody is living happily, and everybody has mental, physical, sound health. So what do we conclude from here? We conclude from here that encourage support for students and keep on doing recapitulation, so that इतनी बार रिवीजन हो जाए अच्छी चीजों की कि मेरा बच्चा एग्जाम के समय डरे नहीं, वो अपना काम खुशी खुशी करे. That's all from my side, my dear friends. Thank you so much. Now over to you if you have any questions. Any questions from your side? I hope I've not taken any extra time. Our simple ma'am, is there any questions? Anyone wants to ask any questions? Yes. Dear participants, if you have any query, please put it in the chat box. What is your expectation from your kid? I want my kid to be the happiest person in this world. Let him do anything which makes him happy. Because, you know, when my child will grow up and become an adult, my child will understand what gives him real happiness.
If he thinks that good t-shirt, good branded shoes, branded mobiles will give him happiness, then definitely he will do something to earn those things in life. Mat khatam. Are you understanding what I'm trying to say? So as the child grows, the child understands that what actually makes the child happy. अगर खाना खाकर हैप्पी होता है तो खाना बनाना सीखेगा. अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे ब्रांडेड चीजें चाहिए लाइफ में, गाड़ी चाहिए, बड़ी घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो उसको ऑन करने की कोशिश करेगा. और उसको ऑन करने की कोशिश करेगा तो मेहनत करेगा, जॉब करेगा, पढ़ाई करेगा. So the ultimate aim of life, the ultimate aim of education is also, my dear friends, to make people happy. What is the difference between an uneducated and an educated man? The educated man knows how to make himself or herself happy in the right way. An uneducated man doesn't know how to make himself or herself happy in the right way. So education draws a thin line between this. So I think as a mother, all mothers in the world want the same thing. They want their children to be very, very happy. That's all. Whatever gives them happiness. Any other question? I hope you're happy with the answer. I hope there is no any query anymore. Very nice session. Thank you, ma'am, for reflecting us. Thank you. Thank you. So with your permission, I can leave the session now. Thank you, Mitali, ma'am. I would like to extend my special thanks to you for giving such a wonderful training on examination, anxiety and stress. आपने स्टार्टिंग में ही कहा, बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये रियल बात है. एग्जामिनेशन रियल लाइफ में हम हर दिन देते हैं, हर वक्त देते हैं. तो मैम ने जैसा कहा कि अगर हम एग्जामिनेशन को एग्जाम की तरह न लेकर अपॉर्चुनिटी की तरह ले, ये एक अपॉर्चुनिटी है. और इसको लेकर के बच्चों को जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आजकल के पेरेंट्स सबसे ज्यादा इसलिए परेशान है क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं. तो जब हमारे बच्चे यूनिक है तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और ये चीजें हम लोग ही अपने पेरेंट्स को और साथ में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं. तो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच मैम. सो ऑन बिहाफ ऑफ आर्यवत सहोदया एंटायर टीम, कोर टीम, special thanks to you once again, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you. Most welcome, ma'am, always. So, Bye. thank you, participants. Already link has been shared here. So please fill the link with correct name and correct school code. Avinash sir, what you want to say? 3 questions are wrongly answered. Three questions are wrongly answered. Your answers are wrong?
I request all the participants to complete the attendance and the feedback form. Don't discuss the answers here. Five minutes more, the attendance link will be active. So kindly fill up the attendance link.